व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हमने दो पैसेज लिए हैं जिनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस डिफरेंट क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास 8 की दूसरी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो केस है वो है एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली. Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Energy saved is energy generated. ये एनर्जी को सेव करना is equal to energy generated. Let's discuss MCQs based on this passage. Our first question is harnessing energy is, options are difficult or costly or both 1 and 2. Answer is both 1 and 2. Harnessing energy is difficult as well as costly. How can one bring change in case of energy? Options are by exploiting energy or by not wasting energy or by overusing energy. Of course, answer is not by not wasting energy. Next question is saving of energy is considered as, options are energy generation or waste of energy or limiting energy. Answer is energy generation. Save energy is equal to energy generation. Next question is energy generated using tides is, options are biogas or tidal energy or thermal energy. Answer is tidal energy. Clear? Next case is organic waste such as dead plants and animals material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. Clear? The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digester to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produce huge amount of organic manure each year. Now let's discuss MCQs based on this passage. First question is gaseous fuel obtained from conversion of the organic waste. Options are biogas, natural gas or CNG. Answer is biogas. The gaseous fuel that we get from the conversion of organic waste is called biogas. Next question is CNG stands for, options are combined natural gas or compressed natural gas or clarified natural gas. Answer is compressed natural gas. Next question is organic waste is decomposed by, options are bacteria or virus or animals. Answer is bacteria. Organic waste is decomposed by bacteria in digesters. Next question is biogas is a mixture of, options are carbon and methane or carbon and hydrogen or carbon and nitrogen. Answer is carbon and methane. Next question is organic manure is obtained by, options are mixing of chemicals or decomposing organic waste or mixing organic materials. Answer is decomposing organic waste. That is all for today. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में साझा
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए-नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।